checking this thing which I have applied. So I just find out the total number of orders. What I'm going to do is I'm going to replace the slashes with numbers. So I'm going to use another formula over here, which is called as substitute. Now, what is my text value? I have to replace my text value as this. This is my original text. See, syntax is already displayed it on your screen. You need not cram any syntax. You can actually remember it on your screen. This is my text. What is my old text? My old text is this much. What is my new text? My new text is this. That's it. I don't want to replace it with anything. Now I will press enter. This will give me क्या वो मीटिंग में नहीं हो क्या? text value without the slashes. Now let me count the length of it. समय क्या आएगा इसको एक बार नहीं आएगा और दोबारा जो है स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो फिर दोबारा This now हो you सकता है see, कोई चीज बता रहा हो if I subtract the original अरे length, वो इंक्वायरी now लिया वो आ गया है get the सुबह number of slashes. That means if I say equal to ठीक है this वहीं से उतर जाओ minus सीधा आज इसका रूल रिपोर्ट पता निकालो करना निकाल पड़ेगा है देगा क्या छुट्टी वाले दिन तो छुट्टी है this, उसमें क्या I will get the number of slashes. And in छुट्टी की this, जगह यहाँ लो if I add, and in this, if I अगर यहाँ से one, कितने दे this is the number of orders. 100 किलोमीटर So होता I तो can वहाँ just गए भी होते drag घर this में आ down जाते and ज़्यादा बार दो see बुला घंटे के लग that लेकिन जाते भाग ले ही ना जाए we'll see that 250 में I तो don't 6 घंटा लग जाएगा that उसमें means I'm not और following ये the खाएंगे values. तो हैंडओवर तू Just लेगा? copy the values of the numbers. अच्छा Let's copy the values एक्चुअली of the भार्गव numbers. जाता था सैटरडे संडे And then if I copy, को you will get the number of orders. सीनियर मैनेजर मना कर दिए कहीं This is लगे how you can use the length and substitute function. So length सीनियर function मैनेजर is मना to कर find दिए out the length of the value, कहने लगे and substitute function अरे is भार्गव नहीं to था find out the to substitute a value with another value. तुम्हारे यहाँ सर तुम्हारे कोई And सहेली को using this पेट length and जाने देते substitute हैं functions, we have derived the number of animals. Right? हेलो Now यार let's पेमेंट try and बहुत हुआ understand what are मोबाइल the functions we need. लेकिन अभी तक आया First नहीं is है the length उसमें लिखा है function. कि आपको Length function पेमेंट helps in वो counting दे the दिया length गया of. मैंने भुवन को कॉल किया हाँ भुवन कॉल किया कहा 2 हफ्ते में आ जाएगा Even if I have 10,000 calls, even if I एक have चीज यहाँ और होती है वही पावर वाला अगर नहीं आ रहा है ऊपर समझ लो चाहिए कहेंगे कि अभी पैसा नहीं है अकाउंट में so इसलिए नहीं even आया if you पैसा आया तो केबल देखो आपके में पास वो लगा वाली देंगे है ना सब वो वाली अर्थिंग वाली what I है have done over here is ग्रेजुएटी भी I दो know बार that बैटरी का using काम the है number of इसके slashes दिमाग I से have करना seen, the number of orders, each हाँ of them represents the order अब number. उसमें The number of यार भाई orders टाइम in this लगेगा साल भर is लगेगा basically what अच्छा हुआ मैंने अभी लैपटॉप नहीं लिया my ये लोग number of प्रेशर slashes बना are 4. लैपटॉप The वापस number करो of orders और in नया this is लैपटॉप 6. खरीदना My मैं number of मना slashes करते is मैंने 6. मना कर दिया चार्जर My हमने से कहा new भी लोड orders पैसा are नहीं करना 7. होगा ना है चार्जर और जब ये कंफर्म हो First, गया what am I लैपटॉप अगर खरीदेंगे तो 2 साल out बाद the पैसा length of the मिलेगा entire text जब file. मोबाइल का आठ Entire आठ text हजार file. रुपये For नहीं that मिल I'm रहा using a तो function लैपटॉप called का क्या as मिलेगा नहीं लोड से उठाओगे तो वहीं से उठा so लोगे I will just इसी use this ये function अच्छी length. चीज है And length of this tab. Now what I'm going to do is I'm going to replace these values of एक वो slashes वाला 48 है वोल्ट का with a एमसीबी कहाँ nothing, वो with कार्ड नहीं nothing. मिला एसी के एमसीबी If I replace the value हाँ of the तो slashes ऐसा ना with हो एक्सपायर nothing, हो जाए ना यूज करो in that I can find out the कैसे length यूज किया without जाता है देखो मुझे अगर बता तुम दो finding लोड out को how many डिस्टर्ब number of करोगे तो slashes I बंद होगा have in my सारा code. Right? For डेट that, करना what पड़ता I है will do is first of all I will just replace कैसे this slashes. I will have to get rid of this slashes. नहीं And this 48 वोल्ट कहीं से to उठा के उसको remove दे these दोगे वहीं slashes, तक what में am I देखते doing is I'm रहोगे using a बिना function बात called ये as ये नहीं हो substitute. पाएगा Now substitute मतलब basically दो substitutes the value of a text within हाँ फ्लक्सी वाला ऐप डाउनलोड किया हाँ हाँ उसके बाद उसको किया खोलो उसके एक एक का ट्रेस कर लो text इसमें समझो कौन सी है एलसी एसपी है ये ले जाकर रख लो वही एक जगह सब दे देगा यहाँ से सामान हटा दो so स्टोर you में से replace the value of text over here. दो है इसको ट्रेसिंग करके लाई जाओ जिस एमसीबी पे लगी है वहां से इसको निकाल के उसका उस पे डाल दो उसका उस पे डाल दो अब इसमें क्या ड्राइंग बनाना है Instead of समझ this हाँ slash, केबल की बात जो है it हाँ depends आदर्श upon वो your सुबह needs. से बात है What code anything. हाँ So if you have text value, you will give an मैं old तो text. क्या करोगे यार सप्लाई के लिए तो तुम करो सप्लाई
ठीक कर रहा है। what text you will replace it? You will मैं replace वो it with बात करता हूँ new उनसे text. सप्लाई वर्ड लिख रहा है। And that is I'm going to give the value and it is going to return without slash. Now I'm going to find out the length of this हाँ side. करना Find था। out the यूज length कैसे of this करोगे side. एटीएम की तरह Length. And I'm just going to find out the length of this side. तो डलवा लो Now बीच I में know केबल how अलग to से भी subtract छेद छाड़ रही है। I हाँ subtract तो देखो केबल डलवा लो this तुम। from this. अब तो तुमको और एक भाई तरीका मेरा बता एटीएम की रहे हैं। रेफरेंस दे दो कोई यहाँ से केबल डालो ना, यहाँ से बाहर डाल लो और वहाँ से मीडिया कन्वर्टर चला लो। सीआरएस को या तो स्विच पे चला लो। हाँ तो But ऐसी आ to गई है ना get the यहाँ number of पर। orders, I will have to हाँ अच्छा another ओके plus तो इसमें सिर्फ खाने का खरीद सकते हो and कुछ I'll भी just खरीद add सकते हो it पेमेंट अरे यार स्विच से कहा है ना, यहाँ स्विच लग जाएगा तो यहाँ से तुम जितना भी इतना लंबा प्रोसेस करने से फायदा क्या yes, you मिलेगा can do it with any other method also. This is not the ultimate method, but I wanted to show पैसा you. है कम से मीडिया कम कन्वर्टर से एक इसमें तो होना निकलेगा ही उसको है स्विच लगा बैट नहीं चला सकता। आज देखो नहीं होने से भी चाहिए 8 का तुम पेट्रोल चला सकते हो। Hello? This is not इस समय नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा वो तो रुक है ही जाओ तो वो तो है ही now you can also combine अभी this. कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। What am I going to do? Okay, I will अच्छा ये do बताओ this. जोमेटो I will स्विगी just तो combine this ऐसा formula. खाने I नहीं will मिलता just find out the length तो यार इसका इसका हो ही जाएगा, उसका सोचो कैसे करें, करना है तो मैं भी सोच रहा था इसको एक साल बाद बोल के I इन केस का कुछ हो जाता है तो फिर हम लोग ऊपर आ जाएगा। थोड़ा देख लेकर ब्लैक वाला तार नहीं है ना I'll just find out the length of this. रेड है ही है अच्छा यहाँ जैसे इलाहाबाद में है 2 महीना हो गया रेस कर लो ना, पर डे का क्या I टीएटीएम will मिलेगा also रेस करके substitute the value from अगर this ब्लैक नहीं है text. तो 2.5 mm वाली तार चीर लो साले के, ये जो फ्लेक्सिबल वायर पावर वाली है That is nothing. उसको चीर कर समझ लो ब्लैक In turn, 2.5 mm से I have to कम find out the 48 length of वोल्ट में this खाने as बहुत वाला बड़ा काट पहाड़ दिया है, ये एक दूसरा साथ खाने रहने वाला में बिल आपको भेजा बहुत तो रिजेक्ट कर use it दिया in यार one form, इसीलिए उसको अलग अलग just तार the लगाया clicks, जाता है। or उसको इसलिए कह रहा now था अर्थिंग वाला जो मजबूत तार है, in totality. जल्दी When शॉर्टिंग it का कोई comes, दिक्कत नहीं होगी। whenever it comes in चलो इसमें देखते हैं क्या क्या totality, लगाते I हैं have 800 to हो just जाएगा add अरे फिर वही ये अगर सेल्फ टेस्टेड दिखाएंगे तो 300 हो जाएगा वाली बात, and I can just drag. सेल्फ टेस्टेड क्या I होता can है calculate it individually also, चलिए or I फाड़ can यहाँ just पे calculate the formula. 20% मिलता है 30% This is how I can calculate the यही value. मीटर तुमको लगे, अब यार जान तो उसमें I पहले will ही find वही देखो, मैं कह रहा हूँ सिंगलेस 20% वाले को जोड़ है रहा है, कि 30% instead of writing the formula, I सिंगलेस will वाले use को like जोड़ this. रहा है This is the और bifurcated उसका form. एसटीएम And this is the इधर individual लगेगा form. और दूध उधर लगेगा। 6 मुझे पढ़ने वाला कंप्लीट एक है हम लोगों ने सब रखा है ऑलरेडी। ये अकेले लगेगी नहीं मैंने लगेगी। देखा राजकुमार सर आए थे दिल्ली Please से try स्टोर it को in तुम थोड़ा Excel. दुरुस्त मेल दिखा Later on, you will know how to combine. हाँ it. यार हाँ यार सुनो Okay, ट्राई I'll के wait साथ for 2 हाँ minutes for all. ऐसा रखना एक जो एक आदमी तुमको तो उसके सामने क्यों उठा जाओ, कोई सा भी एक आदमी। अरे सर वहाँ 4-5 आदमी बैठे हैं, हम बता रहे हैं फोन करिए सभी तो हम जाके बैठे हैं। क्या उसको फोन करिए राजीव को फिर सबको लिखला अरे वो जो मेन आदमी है बिजी करता है महेंद्र महेंद्र ज्वाइंट के लिए आया बैठा है। महेंद्र जॉइंट वाला मैं अभी स्टेशन पे हूँ तो बस खुला हुआ है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं रिकॉर्डिंग पे लगा हूँ देखता हूँ अगर तुमको अगर एक्सक्यूज है तो तुम महेंद्र को ले लो, बस एक आदमी चाहिए ना लाल ले लो जाने ना। दो। तबीयत नसाई में तो कल करो, नहीं नहीं हम पहले अभी एकदम तुरंत नहीं कर रहे हैं हमको समझने दीजिए पहले स्थिर दिमाग से करो। वो पहले आधा घंटा वाइडिंग समझ जाए तो खूब समझ लो, सीओपी स्टेशन हम समझ के बता रहे अगर नहीं हिम्मत है तो कल करो, लेकिन अच्छे से करो। हम बता रहे हैं रुक जाइए हम देख अरे लेंगे रहना फरवरी तक रहना 26 फरवरी This form in the chat box चलो ठीक है so that it's easy for all of you. कई दिन से चाय नहीं पी पा रहे इन लोगों की वजह से, चलते हमें यही लेटर लिखने चलते। चाय नहीं पी पा रहे सर, तो कल बुला रहे थे तो आए नहीं। नहीं खेल था पूरा, तुमको चाय पड़ी है, पूरा एक्सप्लेनेशन सब सप्लाई बंद थी, तुम लोग को पता नहीं है। एमसीबी हम ठीक करवा रहे हैं, हम बोलते हैं इतना तेज में आदमी डर जाता है, पूरा बसिया हम सही कहते हैं। तुम जब जिस समय चाय के लिए बोल रहे थे, ऑफर दिए थे, यहाँ सारा पावर बंद था।
और बिजली वाले बुलाए खड़े होकर एमसीबी ठीक करा, किसी को पता भी नहीं चला इस बात का। हाँ, पावर का जान तो सबसे खतरनाक फेलियर है। आप लोग बातें कर रहे थे 2 घंटे से यहाँ पूरा कोर्ट पे था, और उसके बाद उसको बुलाए हैं, उसका एमसीबी बदलवाए हैं, तब आके हम बैठे हैं। हम मोटा मोटा चीज पकड़े थे जिससे मतलब सिस्टम चल रहा है। एम्पलीफायर पता नहीं, एम्पलीफायर स्टोर में रखा है। स्टोर में रखो, स्टोर के बजाय तुम इसको इंक्वायरी में रख दो, वहाँ इसको इंक्वायरी में रख दो स्पेयर में, ताकि आदमी बदल तुरंत वही बदल ले, जब उसको ढूंढना डालना ना पड़े। Interesting formula. समझो, Now see, we are digging deeper इंक्वायरी into में Excel. जाके स्पेयर में रख दो। We are digging deeper into this tool. और यहाँ से चीजें ले जाके स्टोर में रखो, फिर स्टोर मैनेज करते हैं। हम मेरा बात जो कबाड़ है उसको भिजवाते हैं, जो सही है उसको रखते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। Right. वरना Let's कमाई proceed खर्चे करने के लिए further. कहीं रहे हैं। Now, suppose this is my data. Now, if you look at this data very carefully, if I have to traverse down in this data, suppose if I have to traverse little down in this data, you will see it is somewhere around 55 crores. How did I traverse down? Consumption and down. इतना बैटरी का काम दबाव डाल कर नहीं होगा। नहीं साला आग उठाई कुछ गड़बड़ कर दिया तो लेने का देने हो जाएगा, ना करे वो भी सही है। Or you can say the bad and the sad part about this data is that there are a lot of blanks. ये वही है, निगेटिव पॉजिटिव हमको को गुणा करना सोचना पड़ेगा। अब यहाँ सामान दिए नहीं है वर्मा जी, उसका भी तरीका है, तरीका जो केवल नहीं वही चीर देंगे ना। हाँ, चीर साथ रखने का मतलब जानते हैं क्या है? अगर थोड़ा सा भी कहीं इंसुलेशन ब्लैक हो तो शॉर्ट कर जाएगी। चीर के अलग अलग करेंगे ना, अगर कहीं कुछ होगा तो पास पास तो रहेगी नहीं, मतलब हाँ। हालांकि एमसीबी के थ्रू रहेगी, गिरेगी वो भी, सिद्धांत उसमें भी वही काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अरे वो बार-बार फोन कर रहे हैं, क्या पता उन लोग से बार-बार फोन कर क्या कह रहे हैं? अरे चले जाए क्यों चले आए बताओ, हमसे बात करो, हम बात कर लेते हैं, तुम जाओ वो बोल दो कि हमारा नाम ले लो, तुमसे बात करो। बोला तो आप बात कर लीजिए ना, 99 पे किया ना। अरे मैं उसको भेज देता हूँ, तुम जाओ पहले, वो आया है देखो क्या कर रहा है, कहीं आईसीआईएस से रिपोर्ट ना दे। नहीं वो salary is of a female employee. She's gone on a maternity. Now, till a point of time, she was getting a salary, but after a point of time, she was not getting, and she was an unpaid. आया तो क्या दिक्कत है तुम्हें? So she's not. But then she's still a part of the organization. So instead of blank, you should ideally keep it as zero. Now you'll see the significance of that. The moment I put zero, you'll see average changes. So to get exact mathematical equation, it is an ideal practice that you should have some value into the cell. It should represent by some value. You can highlight that value, that is okay. But you should have some values in the cell actually to represent that. That is for sure. Right? So for that, what we will do is we will just remove these blank. चाय पियोगे? थोड़ा वो मीटिंग चल रही है ना। So what I want is that all the values that are blank, I want you to remove that experience and it should be filled up with some value. Probably it should be filled up with a value like NA or 0, so that at least they're highlighted. At least we are highlighted that okay, then nothing information is there. So first of all, I have to identify that blank. So to identify that blank value, I have multiple ways. I can go to this home tab, and in this home tab, I have something called as find and select, and I have an option of go to special. I can just select blank from here. Now a cool tip over here. Again, I promised that I'm going to give you cool tips. I can also press Control G, and in this Control G, I can just directly say special, and I can actually click on this blanks, and I'll click on OK. Now see, I have selected this data, that is why it is there. Just click on this data anywhere. Now press Control G, select blanks, and just click on this. You'll see everywhere, wherever there is a blank, it will be automatically selected. Now whatever value you want to put in
this blank. I want to put the value as NA first of all, and I'll press Control. You will see automatically all the cells value will be put in as NA. Instead of putting it into one individual cell, all the values of the cells will be filled up with NA. Even below, we have not seen that by screen, but everything will be filled up by NA. I repeat, how do I do that? First of all, click anywhere in the data, wherever you are in the data. Do not click outside the data. Control C, Control G, G for Gangtok. Control G. Or you can also use Find and Select and go to Special. You will just select on the blank rows and click on blank. It will select all the blank data. Since I have clicked outside, that's why it is selected on that blank data. But just click on the cell over here. I will get rid of this data. Otherwise, it will keep on selecting this. Just press Ctrl C, select on this data, select on blank rows. It will select all the blank rows of the data. Here I have already entered the data, that is why it's selecting this. Now just write the value as NA. Now instead of pressing anything else, just press Ctrl and enter. Every blank cell it is going to fill up with the value of G. Just fill up that value. You just select the cells over here. Just make sure that you select the data. How did I shift and end? Now, just go to special, select the blanks, press NA, control and enter. That's it. All the data will be. This is what is changing of your data. Basically, by analyzing. Let's quickly try this. I'll wait for 1 minute for all of you to try this. Once done, posting the message done. Keep a Gangtok. So please stay true to your screen. Let me just delete these values. Control G, select the data, whichever data you have. Just select this data. Control G, special. Just select the black values. Write down the value, whatever value you want. I am writing any. It doesn't mean that you write any. I'm writing control and enter, and the values will be written down. Let's try one more cleaning feature in your Excel. Very interesting cleaning feature into Excel. You have these blank rows in the data.
have food, somewhere you have green, you have blank rows into your data. You have to get rid of these blank rows. Probably your data, when you have, especially when you export the data from external sources, we're going to export the data. You have a sheet in which we're going to export the data from CSV file or a text file. So suppose if you are inserting the data from external sources, that time usually the data is very dirty, very haphazard kind of data you will get during that time. So this is the place where we are going to clean the data. Suppose you have a lot of blank rows into your data. So for that, what you will do is just select this data once again. Just go and select this. Now, if you select this data, it is going to give you a lot of other things. Now, just select this data. Again, press Ctrl Z. Go to Special and just select Blanks. You will see all the rows being selected. All the blank rows being selected. On the Home tab, you have an option of Delete. Just go over here and say Delete Sheet. All the blank of the data will be delete. You have select anywhere in the data. Control Z, go to Special, select Blanks. You can select the blanks. On remember, you will be on the Home tab. In that, you have an option of Delete. Just click on this delete and you will see you have to delete cells. You don't have to delete cells. You can delete columns. You don't have to delete columns. Do you want to delete sheet? No, I neither want to delete sheet, but I want to delete rows. So I'll just click on delete rows. And that's it. My data will be deleted from the rows. This is how my delete rows will go. Specific columns, if you have to do, then you have to do it manually in each, because in case if you just do it, you have an option blank cell as well. But I have an alternative for you, which I'll show you just in a few minutes. Alright, now we're going to do one very interesting function which I typically use for specifically gamings actually. But if you have to generate any random number, if you have to generate any random number from a value, then in that case we use a random function. Right? So how will you do that blank generate random number? For that we're going to use a function called as rand. So we have two functions typically over here which I'm going to explain to you. That is rand function and a function called as rand. We're going to generate random numbers between them. So in case if I have to generate any random number between a particular function, I'm going to use the function as rand. Yes, it is going to delete the entire row, even if it has one cell. So to be cautious in this, otherwise fill that cell with a value. We have seen an alternative for that, right? We have seen that fill that cell with a particular value. I've already told you just a few minutes ago that avoid that, fill that cell with a value. In case if you have to delete that, first of all select that blank cells and then delete the values. Then it will clean your data. Right? Now you have to generate the random number. So for that you have a function called as rand. Now what you will do is you just generate the function as rand over here and you will just leave it blank. It will generate any number, any random number between 0 to 1. Now I want to generate this number. I can actually multiply it with 100 and pick that number. So it will generate a random. Every time you press enter, every time this number will change. Every time it refreshes. It could or it could not change. If I press it, if I just do it with 200, you see every time my number is changing. Every time your number can change. And it will be
randomly generating a number. Randomly it is going to generate a number. That is what is a rand function. Now you want to generate a number within a specific limit. I don't want any number to be generated. I want that number should be generated between 1 and 20, or maybe 20 and 25. Then in that case, I'm going to use a function called as rand. Ravi, you can actually post your question in the chat box. You raised your hand. We use a function called as rand between. Now I have to give the bottom and the top value in this. I'm going to give you the bottom value as 20, and I want to generate the number between 20 and 25. So I'll just say rand between. Now you see it is going to generate the value between. Now the number of times I drag this function, every time a new value will be generated. Every time a new value is generated, then I just have the values as rand and rand. Rand basically generates the value between 0 and 1, and rand between you can give the range according to your own choice. So if you give the value according to your own choice, in that case we are going to use rand between. And in case if you have to generate any random number between 0 and 1, then in that case you will use the function as rand. Just give a quick try to that. Generally, if you fill a sheet with random values, in that case, suppose I have to generate the data. Rand give the limit. So in case if I just go, this will also repeat the values for people who are asking me after decimal how to get rid of those values. Okay, I'll just show you. Just give me 1 second. So I have this rand value over here. Now I have to generate the value of random index. So I can just close this bracket and it will generate me the value. Right? Now, if I have to give a specific value, I can just generate it between rand between whatever 100 to 120. I want to generate the value. It will generate the value. Now I have to get rid of the values between the decimal. So if you just go over here in your number tab, you have these symbols over here. And you will not use the rand between function if you want to give infinity. In that case, you have to give the value. Infinity is no number actually. Infinity is something which is mathematically not a number. That is why it gives value as random. You can just reduce the values from here, decimal values from here. Or you can also go to this number format over here. Just go to this number format. Let me just take this. I'll multiply this also by 100. What I just go to this number format over here. Just go to this number format. Just go to this number and you can reduce the decimal places from here. You just have the decimal places from here. I'll give you the formula in the chat box. I'm using this. See, this function is in case if you wish to generate a series between a particular value. That is where you use this function. So usually, see, Excel is not only used for calculation purposes; it is used for development of a complete software also. So Excel with a programming language that is VBA, Visual Basic Analysis, comes in house with it. Excel has this programming language. So I generate any value. Like suppose I can generate a form in this. So in case if you go ahead and generate, I hope Sandeep you are using the latest versions. It will work for you. It will work. Use the formula which I have given in the chat box. So in case if you have to generate, say suppose I want to generate, you can. See if you want to use, see guys, I already told you there are multiple ways to do a particular thing. It is not way that I'm telling you is the ultimate ways. I'm telling you another way to do a particular thing. But
अरे बैठे तो हैं। Done that.